Hello friends, welcome to the simplest Vedic astrology course, जिसमें हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि आप अपने चार्ट्स को खुद ही सीख सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं, खुद ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स के चार्ट्स को आप पढ़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करनी है। अपने आप डिसीजन ले सकते हो और आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से बात करने की आपको वो रिक्वायरमेंट या नीड नहीं रहेगी। देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू गो एंड रीच आउट टू an astrologer to understand your life. And we discussed this before, that astrology is the only tool in this entire world, whether old, new, anything. This is the only tool, only spiritual technology tool which can help you understand what is happening in your life. What was happening, why did it happen, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों. Every single question can be answered with astrology and astrology alone, and there is no other tool in this world. So now we move on to the next chapter, that is planet relationships. एक चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कौन से प्लैनेट हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी वेंट ऑन टू असाइन. हमने कैरेक्टर असाइन किया. वी आर असाइंड अ सिंगल कैरेक्टर एंड वी सॉ कि एक फैमिली स्ट्रक्चर हमने बनाया ताकि हमको याद रहे कि कौन क्या है. फादर सन है, मदर मून फिगर है, ओल्डर ब्रदर मार्स है, यंगर ब्रदर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की वाइफ है वीनस, और इन सब के ऊपर सैटर्न है जो ग्रैंडफादर है, और 3 अंकल्स हैं, राइट. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल. हम बस ये देखेंगे कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसको अच्छा नहीं लगता, कौन किसका. हम दुश्मन वर्ड यूज नहीं करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड दुश्मन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज प्लैनेट्स आर नॉट हियर टू कॉज यू ट्रबल. एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर. कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपको गिराने की कोशिश करता है या फिर मतलब कोई आपको तोड़ने के लिए आ रहा हुआ है. ऐसा कोई प्लैनेट है नहीं, राइट. There are no such planets who want to cause you harm. Every single planet is only there to create a unique experience for you in life. Saturn is also here to create a unique experience for you in life. So now having said that, हम 3 चीज़ें देखेंगे. कौन किसको अच्छा लगता है, कौन किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और कौन किसको बेसिकली न्यूट्रल लगता है. मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कर रहे हो कर लो, राइट. तो अभी तक में देखा, अभी सॉ दैट सन इज द फादर और द फादर फिगर. सो द फादर फिगर विल ऑलवेज लाइक द मदर फिगर, राइट. सो सन likes the mother figure in this case. You see this, sun likes the mother figure. Sun also likes Jupiter. There is nobody who doesn't like Jupiter. The reason is Jupiter is always the benevolent god. He is always doing good. He's always giving you good advice. He's always teaching you well. So sun also likes Jupiter because the king will always like his teacher. So Jupiter is the king's teacher. So sun likes Jupiter. And now sun is a warrior himself. Sun is the king. He is the leader. Mars is like the police, right? So पुलिस वाला आर्मी को अच्छा नहीं लगेगा कि आर्मी जनरल को. So if Ajay Devgan's father is a general in the army, then Ajay Devgan obviously likes him. So sun will always like Mars. So sun has an inclination towards Mars. तो अगर sun और Mars एक ही घर पे हैं तो आप लीडर भी रहोगे, आप वॉरियर भी रहोगे, और वो बहुत एम्पलीफाई भी हो जाता है. वैसे हम बहुत देख पाते हैं, बट हैं बहुत सारे चार्ट जिसमें सन और मार्स दोनों साथ में रहेंगे. सन और मून भी हमने बहुत चार्ट में देखे हैं. चार्ट्स तो हमेशा हर यूनिक ही होता है. एंड देन सन और मर्क्यूरी. इफ यू सी, सन इज ऑल अबाउट लीडरशिप, सन इज अबाउट प्राइड एंड ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट मर्क्यूरी बीइंग सन, मतलब मर्क्यूरी बेटा है सूर्य जी का, and Mercury is transactional. Mercury is about intelligence, communication, money, analytics, etc. etc. तो Mercury is just neutral. हम बोलते हैं बेटा तू कुछ भी कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं न्यूट्रल हूँ तुम्हारे से. Right? Now
सन एंड लेट्स से राहु एंड केतु। तो आपने जो कहानी सुनी थी जिसमें स्वर भानु बैठे थे सन मतलब सूरज और चंद्र के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच में, जब उन्होंने अमृत किया था, तो उन्होंने दोनों सूर्य और चंद्र को उन्होंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, बेवकूफ बनाया था। तो तब से राहु और केतु का सन और मून से ज्यादा चलता नहीं है। एंड मोर देन दैट, सन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स responsibility, dharma, leadership, right? But Rahu always represents, you see, no boundaries, expansion, and choose any way you want to gain whatever you want. So it's a lot of fog, it's a lot of gas, right? So sun will never like Rahu. So it's not like they are enemies, but sun is not favorable to Rahu. Similarly, Venus. So sun and Venus don't go together because sun represents a different idea and Venus represents a different idea. Venus represents beauty and luxury and all of those things, right? But sun is always looking at his kingdom and his leadership and everything else. So they are in completely two dimensions. So they don't really go together. So similarly, Sun and Saturn don't like each other. Let's say how and why. Saturn is always against the leadership. Saturn is always against the leadership or authority. So Saturn does not like authority figure. Saturn हमेशा वो मास को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोअर क्लास होते हैं. Saturn always represents the servants, whereas Sun always represents the leadership and the upper set of people. So Sun and Saturn philosophically do not go together. Okay. Now let's go to the next one. Okay. Now let's see Venus. Venus obviously Mercury को like करते हैं. She likes Mercury because obviously when we looked at the family chart we said Venus is the girlfriend figure or the wife figure to Mercury. So Venus will always like Mercury, right? So similarly Venus and Saturn also do good because Saturn likes Mercury and Saturn likes Venus, right? So Saturn has no problem with Venus and Venus has no problem with Saturn. So Venus likes Saturn, right? They both have the same philosophies. Now Venus is neutral to Mars. Venus is like, okay, I'm married to Mercury, I really don't mind Mars, so I'm neutral to Mars. Venus and Jupiter is neutral or good to most people, so Jupiter से हम neutral हो जाते हैं. Rahu also sometimes brings in luxury, so I'm going to be like not good, not bad. I'll just say I'm neutral to Rahu, right? So Venus does not like or does not favor Sun because obviously Sun represents a different idea altogether. Similarly, Venus does not like Moon because Moon is emotional. Moon and Venus represent two different things. Venus represents beauty and luxury and all of those things, but Moon represents emotions. So they are two completely different things. You can't be emotional and you can't be luxurious. So Venus doesn't go really together with Moon. And which कौन सी बहू अपनी सास को अच्छी लगेगी? It is not possible that happen, right? And then Venus does not like Ketu because Ketu is all about detachment. केतु आके बोलते हैं तुमको ये वॉच घड़ी दी चाहिए, खरीद दो, but Venus wants it, right? So Venus and Ketu don't go along. Okay, now let's go ahead. Now Jupiter is good to most people, but Jupiter likes the idea of Sun and Moon because that's a king and the queen. Jupiter is the teacher to the king and the queen, so he will always like the king and the queen. Jupiter also likes Mars because Mars has his own dharma and Mars is a smaller version of the Sun. So Jupiter will always be benevolent and good to Mars. Jupiter is a teacher, Saturn is a teacher, but they are different. Jupiter is a teacher, Saturn is a principal of a school. So they are doing the same basic things in different ways. So Jupiter will always be neutral to Saturn. Okay.
Now, Jupiter and Mercury, Venus don't go along together because Mercury is very transactional and Venus is all about luxury and Venus supports Mercury. So, Jupiter doesn't go along with Mercury and Venus most of the time. Matlab, Jupiter is all about dharma. Jupiter is all about learning and wisdom and everything else. Mercury is intelligent by nature. Mercury is cunning by nature. Mercury is very intelligent and smart by nature. So a teacher versus somebody who is very intelligent, it's like a teacher and a Sheldon Cooper in Big Bang Theory. They don't go together. And similarly, Mercury and Venus are close, so Jupiter does not go well with Venus because Venus does not represent what Jupiter represents. They are completely philosophically different. Okay, then let's go to Saturn. So Saturn, as we went through before, Saturn is good with Mercury. Mercury is transactionally intelligent and all of that. So Saturn supports Mercury and Saturn supports Venus. Again, Saturn is neutral to Jupiter because they're both teachers. Saturn is neutral to Mars because Saturn does not have a problem with Mars. Mars is following his own dharma. Saturn has no problems with that. Saturn does not like authority figures. Saturn does not like Sun and Saturn does not like the Moon. So that is for sure. If Saturn is the principal, or if Saturn is like maybe like a laborer in a factory, he will always oppose, he will always rebel against the owners of that factory. हमेशा लड़ाई करेंगे अपने फैक्ट्री ओनर्स के साथ और सपोर्ट करेंगे अपने कोवर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम करते हैं. Saturn is that figure. Right? But Saturn always likes Mercury and Saturn likes Venus. And let's see Moon. Moon has nobody who Moon doesn't like. Moon always is in a good relationship with all the other planets, all the other characters. But Moon's favorite is always the Sun and Mercury, the Chota Beta and the husband. So she always likes Sun and Mercury. But Moon is neutral to most other planets because it doesn't matter much what Moon says I'm going to have a good relationship with everyone else. It doesn't really matter what they are doing, how they are. So Moon is neutral to most of the other planets. Okay. And then let's come to Mars. Right. So Mars, as we said, if Mars is the police inspector, Sun is like the general of an army. So Mars will always respect Sun. And since he's also the father figure and Mars is all about family, Mars will like Sun and Moon, and Mars will always like Jupiter. Similarly, Mars is neutral to Saturn and Venus because there is really no philosophical exchange. There is nothing that says I don't like you. Right? Mars is a warrior, Ketu is a warrior, so he's just neutral. But Mars does not like Mercury because Mercury is second in line for becoming the king. So obviously you will not like the second person who is right there waiting for taking away your kingdom. And Mercury is also not a fighter. Mercury is all about intelligence and communication. So Mars and Mercury are completely against each other in terms of the characteristics and philosophy. So Mars doesn't like Mercury. And Mars also does not like Rahu because Mars is straightforward and Rahu can use any tactic to get what he wants. Mars is always about energy. He's like Singham. He'll go and beat somebody up. किसी को तोड़ के वहाँ से कुछ लेके आएंगे, इसको छुड़वा के आएंगे. But Rahu uses tactics. Rahu uses dark tactics. Dark tactics in the sense कोई भी tactic use कर लिया, dimaag use कर लिया, कुछ भी कर लिया, किसी को भी नीचे गिरा लिया, and then achieve what he wants to achieve. So that is Rahu. So Mars does not like Rahu. So Mercury has a lot of respect for Sun. He likes Venus, and Mercury also likes Rahu. Mercury is not somebody who likes the Moon because the biggest enemy for intelligence is always emotion. So if you try to invest money into stocks, your biggest enemy is
योर ओन इमोशंस। अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ पे तो उसका वैल्यू आगे बढ़ेगा कि नहीं वो हमें नहीं बता सकते। बट इफ़ यू बाय अ स्टॉक इंटेलिजेंटली, अगर आपने इंटेलिजेंटली एक स्टॉक खरीदा है तो आपको पता रहता है कि इस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है और स्टॉक कितना बढ़ेगा। सो मर्क्यूरी डज नॉट लाइक मून, and Mercury is neutral to the other planets because Mercury has nothing to offer or nothing to take away from these planets. So that's so this is all about planet relationships. Let's just see if there is anything else other than yes. So this is all about planet relationships. Which planet likes whom, which planet doesn't like whom, and which planet is neutral to whom. We will not say which planet is an enemy. हम enemy नहीं बनाएंगे. Because all planets are here to only support your growth. They are only here to support you as a human being, create you or mold you into a character. आप में 10 चीज़ें हर एक प्लानिट डालेंगे जिसके वजह से आप हो जाते हो। आप एक आदमी या औरत हो रही है जिसके वजह से आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन पाती है सोसाइटी में। तो हम एनिमीज़ नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम उसको लाइक डिसलाइक या फिर एक न्यूट्रलिटी के तौर पे लेती हैं। अगर आपको ये याद नहीं आते हैं तो भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम यही होता प्रेडिक्शन पे। पर जब हम कंजंक्शंस को देखते हैं या फिर एस्पेक्ट्स को देखते हैं, हम एस्पेक्ट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो व्हेन वी लर्न अबाउट कंजंक्शंस, दैट इज़ दो प्लैनेट एक ही रूम में एक ही घर पे बैठे हैं, तो तभी वो या तो लड़ेंगे या तो अच्छा सा बात करेंगे या तो खाली बैठे रहेंगे। तो तभी थोड़ा सा प्रेडिक्शन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हम आपका टाइम देखेंगे जो बाद में सीखेंगे, तभी थोड़ा सा हेल्प करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। बट आप इसको एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझिए, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तो दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको याद नहीं है कि मर्क्यूरी और किसी के बीच में, मून के बीच में दुश्मनी है, या फिर मर्क्यूरी डज नॉट लाइक मून, that only means that it is not very important. So it's totally fine. So you will not, वो factor को आप consider नहीं करेंगे when you are doing the prediction. So it's totally fine. So, okay, so let's go with the next lesson.